IELTS stands for International English Language Testing System, and it is mainly of three types, in which we have IELTS Academic, IELTS General Training, and IELTS A1 for Life Skills. Academic उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बेसिकली बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड फॉर स्टडीज़. एक जनरल ट्रेनिंग उनके लिए जो कि वर्क परमिट या जॉब्स के लिए या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं. और A1 लाइफ स्किल्स उनके लिए है जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन यूके. IELTS is actually International English Language Testing System, and it consists of 4 modules such as reading, writing, listening and speaking. And it is an international standardized test that is designed for the non-native speakers to check their language proficiency. And the main body for conducting IELTS is British Council, IDP and Cambridge. इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है. ऑफ कोर्स अ स्टूडेंट हैज़ टू बी लाइक मैट्रिकुलेटेड, मतलब जो मैट्रिक के बाद वाले स्टूडेंट्स हों वो, या फिर FSC के बाद आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं according to your need. USCCS has a rich legacy of teaching English for the last 16 years. As we focus on individual students' weaknesses, we also give individual sessions to the students, those who are weak actually, and we also give them basics sessions for reading, writing, listening and speaking in order to overcome their weaknesses, convert those weaknesses into strengths and make them capable to get higher bands by various strategies. हम स्टूडेंट को काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश बेसिक इंग्लिश के लिए. फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट इज़ वीक इन बेसिक कॉन्वर्सेशन, सो वी प्रोवाइड देम बेसिक कॉन्वर्सेशन क्लासेस. इफ स्टूडेंट इज़ वीक इन ग्रामर, वी प्रोवाइड देम ग्रामर स्पेशल ग्रामर क्लासेस. सो येस, वी फैसिलिटेट देम इन अ वेरी वेल वे. With extensive tips and techniques by our trained faculty, we make our students able to attempt the test with the confidence and without any fear. I'm doing IELTS course here, and IELTS is such a professional course, and I want to study in abroad. That's why I choose IELTS. Today's is an online world, and business is shifted toward online. If I have good grip in English, so I can easily handle all the business activities. I want to go for higher study. That's why I came here for IELTS preparation. I'm doing BBA from Namal University, Islamabad. I want to go abroad, that's why I'm here for IELTS preparation. Actually, listening module, it has 9 bands. Reading, it has 9 bands, and writing also. And the speaking module, it also has 9 bands. And then the overall bands, you are scale, you are measure in 9 bands. Then how much do you score? What separates the University of Spoken English and Computer Science with others is its facilities. हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं हर मामले में. स्टूडेंट अगर मॉर्निंग में क्लास लेना चाहता है मॉर्निंग में ले सकता है, इवनिंग में क्लास लेना चाहता है इवनिंग में. उसके अलावा हमारे पास IELTS लैब है, IELTS डिपार्टमेंट है, जिसमें स्टूडेंट किसी भी टाइम आके प्रैक्टिस सेशंस के लिए बैठ सकते हैं. टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि उनके प्रैक्टिस सेशंस को कंडक्ट करते हैं, उनको असेस करते हैं, और इन केस अगर उन्हें ऑफ क्लास कुछ असिस्टेंस चाहिए टीचर की, तो वहाँ उन्हें प्रोवाइड की जाती है. We also record the videos in camera in order to make them overcome their weaknesses and make them bold enough so that they may face international trainers and also overcome their hesitation in the real test. So IELTS is not just a test that is based on your rote memorization, or if you can say you'll spend 15 to 20 days by watching videos on the internet. So you are going to master your skill and you can go for a high band score. There are a lot of tips and techniques involved for scoring a good band in IELTS.